Hello children, how are you? I hope you all are doing well and having a great time learning about different things of EVS and our world around us, our surroundings, okay? I hope everything is so very informative for you, okay? And it helps you to understand things better around you. Okay, now we are going to talk about our Earth, okay? And we are going to talk about our solar system. जैसे आपने रात को देखा होगा स्काई में स्टार्स होते हैं, फिर मून होता है और दिन में कौन होता है? सन होता है. स्टार्स भी होते हैं दिन में, बट बिकॉज ऑफ द ब्राइट सनलाइट वी आर नॉट एबल टू लुक एट द स्टार्स ड्यूरिंग द डे टाइम. सो इस चैप्टर में हम लोग उनके बारे में सीखेंगे और अपनी अर्थ के बारे में, ओके, अपनी मदर अर्थ के बारे में. I know our earth is made up of dash and dash. I live on, where do you live? Plains, hills or desert? जो भी है आपको यहाँ पे मार्क करना है. So, children, we all live on the earth. The earth is made up of land and water. तो earth पे क्या है? Land और पानी से बनी है अपनी धरती माँ, अपनी earth, okay, पृथ्वी. So, different types of landforms. Let's look at the different landforms. The surface of the earth is not same everywhere. It is made up of landforms. So, बच्चों देखा आपने कि अपना जो earth है उसमें अलग अलग किस्म के landforms होते हैं. So, let's look at them in detail. Plains. Radhika's father is a farmer. He grows crops on flat areas. The plains are flat areas of land. जो फ्लैट एरिया होता है लैंड का उसको कहते हैं प्लेन्स. फॉरेस्ट. विहान्स फादर इज अ फॉरेस्ट ऑफिसर. फॉरेस्ट आर पार्ट्स ऑफ लैंड कवर्ड विद ट्रीज. वाइल्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट. ओके, जैसे जो फॉरेस्ट होते हैं वो काफ़ी घने जंगल होते हैं, बिग ट्रीज आते हैं इन द फॉरेस्ट. ओके, और उसमें कौन रहता है? इन दोज फॉरेस्ट लिव द वाइल्ड एनिमल्स. Okay, hills and mountains. Bhumi lives with her mother in a hut on the hills. Hills are areas of land that are higher than the surrounding land. Very high hills are called mountains. The mountain peaks are covered with snow. Okay, children, so where does Bhumi stay? Bhumi कहाँ रहते हैं? Bhumi रहती है हट में जो हिल के ऊपर बना हुआ है. हिल क्या होता है? लैंड से थोड़ा रेज्ड एरिया जो होता है वो होता है हिल. ओके, और बहुत ऊंचा जो होता है हिल उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं माउंटेन. और माउंटेन पीक्स जो होते हैं उसमें जनरली क्या होता है? स्नो. ओके, वैलीज. भूमि's mother works in the fields growing in the valley. The lowlands between two hills or two mountains is called a valley. जो माउंटेन और हिल्स के बीच में जो नीचा वाला इलाका होता है, जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं valley. Okay, island. Shanu's family is going to Maldives in this vacation. Maldives is an island. An island is a land that is surrounded by water on all sides. तो island क्या होता है? वो होता है एक land होता है, it's like a piece of land with say trees and different things where like the houses and all are made of the people living there. So, but उसके आसपास क्या होता है? उसके आजू बाजू में क्या होता है? उसके आजू बाजू में होता है पानी. Okay, plateau. A large flat area of land which is higher than the land around it is called plateau. It is also called a tableland. Okay, जैसे हम जो लैंड पे रहते हैं नीचे ग्राउंड लेवल पे जो लैंड होता है वैसे ही थोड़ा ऊपर जाओगे तो ऊपर ही इलाकों में भी ऐसे लैंड होता है जो फ्लैट होता है तो उसको कहते हैं प्लेट्यू. ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ टेबल लैंड. सो नाउ फाइंड आउट अबाउट द टू हिल स्टेशंस ऑफ इंडिया. ओके, इंडिया में इंडिया में से कोई भी दो हिल स्टेशंस के बारे में फाइंड आउट करो. नाउ लेट्स लुक एट द वाटर बॉडीज. Our 3/4 of the Earth's surface is covered with water. That's why it appears blue and is known as a blue planet. Earth को हम क्या कहते हैं? Blue planet, because उसका 3/4 हिस्सा जो है it is covered with water. We find water in different water bodies like ponds, lakes, rivers, seas and oceans.
An ocean is a large water body. Its water is salty and unfit for drinking. जो ओशन होता है वो बहुत बड़ा होता है, समुंदर कहते हैं उसके, बट उसका पानी कैसा होता है? सॉल्टी होता है. क्या आप पी सकते हो सॉल्टी वाटर? नो. A sea is also a large water body, but seas are smaller than ocean. Okay, seas भी समुंदरी होता है, but वो छोटा होता है. It is smaller than the oceans. Rivers are formed when the snow melts from mountains. Repeat. So बच्चों सी जो होता है वो भी समुंदरी होता है, बट वो ओशंस के हिसाब से इट इज़ इन कंपेरिजन टू ओशन इट इज़ अ स्मॉलर वाटर बॉडी. One more thing, the sea water is also salty and you cannot drink that water as well. Okay, now let's look at rivers. Rivers are formed when the snow melts from mountains. The water that flows in rivers is used for drinking. Rivers flow into seas and oceans. ओके, तो रिवर भी होते हैं वो जब माउंटेन में जो स्नो होता है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, तो उसका पानी जो आता है वो रिवर में it goes into the rivers. Okay, and this water is fit for drinking, but of course we need to purify the water, we need to clean the water before we drink it. Okay, so उसके अलग अलग steps होते हैं, अलग अलग stages होते हैं, एंड यही पानी सीज और ओशंस में भी बहता है. ओके, लेक्स एंड पॉन्ड्स आर स्मॉल वाटर बॉडीज. दे आर सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स. ओके, सो नाउ डू इट योरसेल्फ. You have to name these things of India. Okay, different things of India like islands, seas, rivers and lakes. Okay, so now that we've looked at the different things on our earth, we need to look beyond our earth, that is the solar system. So let's look at the solar system. The solar system refers to the earth and all the objects that travel in a circular path around it. तो अर्थ के आसपास जो सर्कुलर पाथ में घूमते हैं उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे. सन इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सबसे बीच में कौन होता है? सेंटर में कौन होता है? सन. द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, 8 planets and their natural satellite such as moon. So let's look at the sun. The sun is a huge ball of gases. It gives us heat and light. सन से हमें क्या मिलता है? हीट मिलती है, लाइट मिलता है. It is very big in size but looks small because it is far away from us. वो साइज में बहुत बड़ा है बट हमें दिखता है स्मॉल बिकॉज वो हमसे बहुत दूर है. The sun rises in the morning and sets in the evening. Okay, but the sun is what happens is it, आज अगर यहाँ पे हमारे यहाँ पे मॉर्निंग है तो कहीं और होगा इवनिंग, या फिर जब यहाँ पे इवनिंग होता है कहीं और होता है मॉर्निंग. ठीक है. द प्लैनेट्स. द सोलर सिस्टम हैज़ 8 planets. 8 planets. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. All planets move around the sun. ठीक है. So now let's look at the fact. Mercury is the smallest planet and Jupiter is the largest planet. ठीक है. Now let's talk about the moon and the stars. We can see the moon and the stars in the night sky. रात को दिखते हैं moon and stars. The moon moves around the earth. It changes its shape every night. Sometimes it appears in a full circle called full moon or Purnima. Sometimes it appears half and sometimes we cannot see any moon. This is called a new moon, Amavasya. ओके, तो बच्चों जो मून होता है वो अर्थ के पीछे घूमता रहता है, अराउंड द अर्थ. इट मूव्स अराउंड द अर्थ. तो उसकी वजह से उसका जो शेप होता है वो हर रात को चेंज होता है. तो कोई कोई दिन होते हैं जब हमें पूरा मून दिखता है, कभी कभी हमें मून आधा मून दिखता है या डिफरेंट फेजेस ऑफ मून दिखते हैं, और कभी कभी हमें बिल्कुल ही नज़र नहीं आता है. ठीक है. सो देर आर डिफरेंट नेम्स फॉर दोज डेज. सो जब आपको पूरा मून दिखता है तो उसको कहते हैं फुल मून या पूर्णिमा. जब आपको मून बिल्कुल नहीं दिखाई देता है तो उसको कहते हैं न्यू मून या अमावस्या. ओके. द स्टार्स ट्विंकल एट नाइट.
We cannot count them because they are numerous. बहुत से stars होते हैं. Some stars form patterns in sky which is called constellation. अगर आप रात को बैठ के देखोगे, अगर आकाश की तरफ देखोगे तो आप देखोगे stars अलग अलग patterns बना रही है. तो these patterns are known as constellation. Okay. Now remember, plains, forest, hills, mountains, etc. are landforms. Ponds, lakes, rivers, seas and oceans are water bodies. Our solar system consists of the sun, 8 planets and their natural satellites such as moon. Okay. Now let's look at the new words of this chapter. Like in the word bank, it is mentioned about the landforms. Okay, different types of land. Natural satellites are objects that move around a planet in a circular path. Okay, so बच्चों start exploring this. अगर आपको टाइम मिलता है तो नेहरू प्लानिटेरियम चले जाओ और अपने स्टार्स के बारे में, मून के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में आपको बहुत कुछ चीज़ें जानने को मिल जाएगी वहाँ पे. ओके, देयर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन देयर. सो हॉलीडेज में ज़रूर चले जाना. एंड फॉर नाउ रीड दिस चैप्टर एंड डू द बैक एक्सरसाइजेस.